Question answer of class 4, grade class 4 and English unit 1 NCERT textbook Neha's alarm clock by R.L. After watching this video, the students will be able to learn the question answer of the Neha's alarm clock. My first question goes to you all. Who was Neha? Neha कौन थी? Neha was a girl. Neha एक लड़की थी. इसका सही जवाब है. My question number 2. Neha's alarm clock ring at what time? बच्चों, नेहा की जो अलार्म क्लॉक थी वो कब बजती थी, कितने समय पर बजती थी? इसका सही जवाब है नेहा अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. Now my third question is, who said wake up fast? Bird said wake up fast. Question number 4. Who fills Neha's room with a warm smile? नेहा के रूम किसने पूरे गर्मजोशी से स्माइल से भर दिया था? बिग ब्राइट सन. Now my question number 5. Who said this and to whom? किसने किससे कहा? Wake up, sleepyhead, you will miss the bus. The correct answer is mother said this to Neha. मम्मी ने कहा, नेहा से बोली थी. Question number 6. Write 3 describing words from the story of the Neha's alarm clock. Describing words. The 3 describing words are warm blanket. ब्लैंकेट कैसा है? गरम ब्लैंकेट है. सन कैसा है? ब्राइट सन है. क्लॉक कैसा है? अलार्म देने वाली क्लॉक है, अलार्म बजने वाली. So describing words means if you describe something, the word before blanket, the word before sun, the word before alarm, clock is alarm. Now question number 7. What is the theme of the story Neha's alarm clock? The theme of the story of the Neha alarm clock is, inside your body there is a clock which tells us when to eat, when to sleep and when to wake up. The importance of time you can say. So Neha alarm clock का मेन मकसद क्या है? इस स्टोरी में बच्चों को किस लिए ये स्टोरी इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि बच्चे इसको समझे, टाइम की जो इम्पोर्टेंस वो समझे कि हमारे बॉडी में, हमारे आईज, हमारे पेट में कब भूख लगती है, हम कब जग जाते हैं, आँख खुल जाती है हमारी आँखें, और हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, ऑटोमेटिक हमारी आँखें बंद हो जाती है क्योंकि जब बॉडी थक जाता है. सो इनसाइड आवर बॉडी देयर इज अ क्लॉक. सो फॉर देयर इज अ टाइम, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टाइम. सो इम्पोर्टेंस ऑन टाइम स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड. सो टाइम का बहुत कीमती है स्टूडेंट, टाइम वेस्ट मत कीजिए. My question number 8. What is the word meaning of the word muttered? Muttered, to speak in a very low voice. Muttered जो है उसके मीनिंग होता है, अर्थ होता है बहुत ही धीमे स्वर पे बोलना. Question number 9. Name the characters of the story Neha alarm clock. Neha alarm clock चैप्टर में यूनिट 1 में क्लास 4 की ग्रेड बुक यूनिट 1, इसमें कौन कौन है? इसमें नरेटर्स हैं. नरेटर मतलब बोलने वाले. नेहाज है, नेहाज की मम्मी है, बर्ड्स है और अलार्म क्लॉक है. Now my question number 10. What is inside you that make you get up at the same time every day? The correct answer is our body clock. My 11th question is, what did bird say? Bird said wake up. Last question number 12. What is the meaning of the word see? The foot of a window, part of window or shelf of window or slab of window. So this meaning जो खिड़की में जहाँ पर चिड़िया आकर बैठती है, ये खिड़की में जो लकड़ी का जो फ्रेम बना होता है ढांचा देहली, तो वो सेल्फ का काम करता है. तो जहाँ पर चिड़िया के बैठते हैं, हम लोग हाथ रखते हैं छोटे बच्चे नीचे, खिड़की के जो नीचे में लकड़ी के चौखट होता है उसे हम लोग सील कहते हैं, SILL, विंडो सील.